चलो भाई, ये पास्ट पेपर का समय है, ये वाला एक खत्म कर देते हैं, है ना। देखते हैं मैं तो क्या क्या पूछा हुआ है हमको यहाँ पे। 50 मार्क का क्वेश्चन है। Obviously, see, we are going to apply the strategy of attempting easy questions first and then do going for the hard ones, ठीक है ना। चलो फिर अभी let's try this. Please carry out the following work. Becoming tax advice to Coil. Cole and Tyrel will attend meetings with us together, and will each have access to all of the advice we provide. Consequently, I can confirm that there is no need for you to consider, एक मिनट, for you to consider any possibility, any possible confidentiality issues between them. Send me an email setting out the following: the behavior required of ACC members in order to comply with fundamental principles of objectivity and confidentiality. Okay. In relation to becoming tax advised to poll any potential threats to fundamental principles of objectivity, confidentiality and safeguards which should be put in place. Okay. So first of all, सबसे पहले हम ये बता देंगे कि as ACCA professionals and members, we should comply with various fundamental principles which include integrity, objectivity, professional professional competence and due care, professional behavior, and confidentiality. Objectivity is a principle in which there should not be any biasness towards one party, or we should not you know they take decisions that will help our clients so that our reputation is built. We should give them as straightforward opinion as possible and be as honest with them. मतलब sorry, honest नहीं, फिर वो तो integrity का हो गया ना। Actually be as straightforward with them as possible, इतना बोल देंगे। फिर आता है confidentiality. As we can see that in the current scenario as well. actually नहीं, ऐसे नहीं बोलते। confidentiality means safeguarding or protecting the information which has been provided by us, by Cole and Tyrell, or any of our ex-clients or current clients. This is because they have trusted they have trusted in us and selected us as their क्या बोलते हैं टैक्स एडवाइजर्स. वी शुड नॉट लीक देयर इंफॉर्मेशन और यूज दिस और यूज देयर इंफॉर्मेशन टू सम अदर क्लाइंट्स एडवांटेज, ठीक है ना। ये अपन बोल सकते हैं। नाउ इन रिलेशन टू बिकम टैक्स एडवाइजर एनी पोटेंशियल थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसके लिए एग्जिबिट 1 देखना है। The memorandum records the matters discussed in a conference call with Paul and Tyrell. They have been married for many years in the process of becoming clients of our firm. Paul and Tyrell have always been UK resident until 1st of July 2023. They left the UK to go traveling. They have been traveling overseas continually since that date. They will return to TK. Neither of them has satisfied prior UK type. Paul commence employment existing. एक मिनट हाँ. JDV is an existing client of our firm. Okay, see, Cole will commence employment with JDV. JDV is an existing client of our firm. So therefore, there will be a confidentiality issue or threat that will come into play. So therefore, we must safeguard ourselves and them from these issues, or from this confidentiality issue. We should obtain permission from Curl and JDV Limited both, that we will be acting for both of them, and inform them about this. Actually, पहले inform करेंगे and then obtain permission, ऐसा ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना। Permission from them. Um, we can ensure both of them by providing them information that we will be using different teams or different audit teams, different people for the various roles, etc. So these can be the safeguards that can be put into place. We should not leak information to JDV Limited about Coel's personal income tax issues, or we should not leak any JDV Limited information to Coel as well. ठीक है ना। However, if still the safeguards are not working and both the clients are not satisfied with us, or are not satisfied with the idea of we acting for both of them, then we should resign from one engagement or one of the engagement, either from Coel side or from JDV Limited side. ठीक है, ये अपन बता देंगे।
अभी अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं। June 25। देखो मैं अभी इस चीज को लिखना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ये मतलब बहुत सारा टाइम ले लेगा और एग्जाम के लिए तो 5 दिन ही बाकी है। ऐसा है। सीनियर, ये देखो मेल पे तो फ्रॉम टू सब्जेक्ट FTST. ACCA members should advise their clients by reference to what is best for their clients and should not be influenced by, for example, bias of conflicts of interest. Confidentiality. ACCA members should not disclose client information to third parties without client permission unless legal or professionally required to do so. Threats and safeguards. Objectivity. Providing advice to Cole in respect of her employment contract with JDV Limited would give rise to a conflict of interest because JDV is a client of our firm. बराबर है। A course of action which is most beneficial for coal may not be advantageous for JDV. This could threaten our ability to provide either or both of them with objective advice. Uh, accordingly, if we wish to act for both coal and JDV, we should point out the potential conflict to them and obtain their permission. ठीक है ना? In addition, we should consider having separate teams responsible for each of them. Perfect. Uh, Confidentiality. It is possible that information we hold in relation to coal could be inadvertently revealed to JDV Limited without coal's consent or vice versa. Again, we should consider having separate teams responsible for each of them. ठीक है ना? Okay. ठीक है। एक सेकंड। चलो भाई, अभी बी पार्ट की तरफ जाते हैं। Prepare notes to be used in preparation for meeting with Cole, which addresses the following issues. I can confirm that Cole does not satisfy any of the automatic non-UK residence tests or or automatic UK tax residence tests in relation to her only home being in UK. With that in mind, explain why Cole will become UK tax resident on 1 November 2025। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई कोल विल बिकम यूके एज रेसिडेंट। अच्छा सॉरी, आंसर पे क्यों जा रहा हूँ मैं? बी का फर्स्ट, ये भी थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को, इसलिए पहले मैं यही कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए पूरा ये पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो इफ शी इज नॉट फुलफिलिंग द ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंसी टेस्ट एंड नॉन यूके रेसिडेंसी टेस्ट ना, तो सबसे पहली बात तो फिर हमको मतलब वो टाइज देखने पड़ेंगे। सो देयरफॉर नाउ वी हैव टू सी द टाइज। बिफोर सीइंग द टाइज वी शुड सी वेदर शी वाज प्रीवियसली अ रेसिडेंट और नॉट। अभी they have always been UK residents until on 1st of July 2023. So therefore, they are previously residents. So therefore, 5 out of the ties should be fulfilled. Abhi, the five, therefore, we have to look at all the 5 ties. They'll have to go to traveling. They've been traveling versus countries since that day. On 1st of November 25, they will return to UK and become UK resident again. They will stay in the UK and for the remainder of the tax year 25-26 such that they will spend 156 days in the UK in this tax year। ठीक है ना? तो अगर वो लोग 156 डेज सेटिस्फाई कर रहे हैं, so therefore if they are spending 156 days in the UK, so therefore they should satisfy। अभी देखो यहाँ पे 156 days previously resident, therefore they will be resident even if this they satisfy one UK tie। ठीक है ना? As they both were married and they both were only traveling the मतलब overseas, the family tie does not get fulfilled। ठीक है ना?
we can see that Cole will commence employment with JDV Limited. JDV is an existing client of our firm. Cole and I did not own a house, तो मतलब वो house वाला type ही fulfill नहीं है, but employment वाला type fulfill हो रहा है, work type. So therefore she'll be using मतलब spending substantial amount of time और substantial work, doing substantial work for a UK company in the UK, ये अपन बोल देंगे. ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट में जेडेवी, आई थिंक या इतना अपन बोल सकते हैं. तो इसमें से एक टाइप तो अपने को मिल गया ना यार, है ना? So, and also they have said that they'll be traveling overseas continually since they're there. So therefore, we can assume that that both of them must be traveling various countries in the overseas, due to which they would not have spent any more time than any other country in the world than they would spend in the UK, which is 156 days. तो वो भी एक टाइप फुलफिल हुआ. तो any one of these about ties will get fulfilled, because of which she will be considered to be a UK resident. ठीक है ना? देखो, अभी हाँ, अभी यहाँ पे ये तो नहीं देखा था, मेमोरेंडम बोला है क्या वो लोग ने? प्रिपेयर नोट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बोला था कि मेरे लिए मेल लिखो या वो लेटर लिखो. यहाँ पे उन्होंने नया क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो, इसलिए हमने यहाँ पे टू फ्रॉम SD लिखा था. यहाँ पे देखो FCSPD वाला अलग 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 फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है. ठीक है ना? ये देखो, these notes are to be used for the preparation of meeting with Cole in the tax year. Not satisfy 183-day automatic test. However, she will be automatically UK tax resident for this tax year, because she will be working full time in the UK for the period of at least 365 days, some of which are in the tax year 25-26. The split year basis will apply because Cole was not UK resident in the tax year 24-25. She became resident in 25-26, and she did not have sufficient UK ties to be UK resident prior to her return to the UK. Consequently, Cole will become UK tax resident on 1st of November 2025, the day she begins full-time employment in the UK. Perfect. Tutorial note. Into split year basis alternative. Actually, मेरे को split year से मैं यहाँ पे बोलना था, पर मैं सोचा कि चाहे तो वो नहीं बोलते. ठीक है ना, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला है यहाँ पे. तो वो एक टाई, मैंने बेसिकली टाई के पर्सपेक्टिव से बोला, उन्होंने टेम्पररी टैक्स रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से बोला हुआ है. बट रीजन हम दोनों का सेम ही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट की वजह से एक्चुअली वो लोग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना? चलो, आ जाओ. कैपिटल गेन्स और तो ये चार्जेबल गेन्स, ये 8 मार्क का है, इसको बाद में करते हैं, मैं बोलूँ. लेट्स डू दिस लेटर. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट registration tax level expenses. The chef's knives which Tiles unincorporated business. एक मिनट ना. Prepare a memorandum for Tiles which addresses the following issues. वैट के पर्सपेक्टिव से, हाँ आई थिंक ये वाला आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं, सी वाला. तो अब तक हमने कितने पेपर का मार्क्स का अटेम्प्ट किया है? 5 और 4, 9 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हुआ है. नाउ विल बी अटेम्प्टिंग नेक्स्ट 12 मार्क्स का. मैं पहले इजी इजी खत्म कर रहा हूँ, और वो जो एकदम ही बट ऑब्वियस है ना, वो मैं खत्म कर दूंगा ऐसे. ठीक है ना? अभी टाइल का एग्जिबिट 3 देखना पड़ेगा मुझे लगता है इसके लिए. हाँ, अभी प्रिपेयर मेमोरेंडम, तो अगेन PC FCSPD वाला फॉर्मेट अपन फॉलो. एक है ना, F के लिए उन्होंने क्या लिखा था? क्लाइंट फाइल. ओके, यही सब उन्होंने लिखा हुआ है. Registration for the purposes of VAT. When carrying out this task, you are not required to refer to a specific product, design cost, or business promotion cost. You should note that Tile will not be accounting for VAT using the flat rate scheme. Explain why it will not be compulsory for Tile to register for VAT, but he could choose to do so voluntarily. सो इट इज नॉट कंपलसरी फॉर टायर टू रजिस्टर फॉर वैट. अभी मैं ऐसे इन जनरली की बोल सकता हूँ ना, क्योंकि कंपलसरी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ही माइट नॉट हैव फिनिश दी 90,000 का वो टैक्सेबल सप्लाईज. ये अपन बोल सकते हैं. चलो देख लो. As you know, I began soldering. ठीक है. The maximum annual turnover, ये देखो, the maximum annual turnover is budgeted to be 60,000, and therefore it will not exceed the value of 90,000, because of which it is not compulsory for Tile to register for VAT. ठीक है ना? It becomes the compulsory once you have reached the 90,000 का taxable supplies का limit. ठीक है ना?
but he will choose to do so voluntarily. However, voluntary registration can be done by Tyrell for the VAT purposes. Explain the factors in relation to output tax and input tax, which will help Tyrell understand the financial advantage and or disadvantage of registering voluntarily. See, advantages पहले बता देते हैं. Once you register voluntarily for VAT, where whatever input VAT that you must be मतलब वो incurring upon the purchases of goods or services, that can be claimed back from the HMRC. Even if you don't have any taxable supplies in the first few years of trading, still those or have taxable supplies with the but the purchases or input VAT is more than the output tax or the purchases. So because of which or the sales basically. So then credit can be claimed for the HMRC from the HMRC for the purchases or input VAT that we have incurred. ठीक है ना. एक्चुअली इनपुट वैट ही लिखते हैं. मैं पता नहीं क्यों स्लैश करके परचेजेस बार बार बोल रहा हूँ. इनपुट वैट लिखोगे तो ही बहुत है. ठीक है ना. Secondly, once we have registered for VAT voluntarily, the pre-registration input VAT claiming and becomes much easier, and more duration can be covered in the sense that 4 years prior to registering, if the supplies of goods, then 4 years prior to registration, uh, goods can be claimed under the input VAT, and if the supplies of services, then 6 months का we can claim. ठीक है ना. कैन बी क्लेम्ड उसके बाद हाँ. the once we are VAT registered, it hides the size of the business, because of which even if the business is small, still the reputation in the market would be that the business is VAT registered. ये अपन तीन बोल सकते हैं. डिसएडवांटेज में हम क्या बोल सकते हैं. नहीं एक्चुअली एक और एडवांटेज है कि इफ द कस्टमर्स आर रजिस्टर्ड आर वैट रजिस्टर्ड, then they would be more keen on purchasing goods from our sub from us, because they can claim their input VAT in their accounts or in their books. ये अपन बोल देंगे. अभी डिसएडवांटेजेस क्या है. If the customers are not VAT registered, then the customers are not registered, then for them the prices of the goods will be unattractive, or the services would be unattractive, because of which they will not be keen on buying goods from us. VAT के लिए, once we are VAT registered, we have to comply with all the due dates of VAT returns and VAT payments, because of which अभी अपने को क्या करना पड़ेगा. हाँ, if we are late on submitting any of the VAT returns or late on paying any VAT payment, then penalties would be charged accordingly. ये 7 मार्क क्लियर हो गया. अलाउेबल एक्सपेंसेस पे जाते हैं. आई कैन कंफर्म दैट शेफ्स नाइव्स आर to be given to potential customers are not items which will be sold by Tyrell in his trade. With that in mind, explain whether or not the product design cost and the business promotion cost will be allowable when calculating Tyrell's tax adjusted trading profit. आ जाओ चेक करो. 60,000. आई हैव सम नॉन बिजनेस कस्टमर्स बट हाँ ये देखो. एक्चुअली आई हैव सम नॉन बिजनेस कस्टमर्स बट मोस्ट ऑफ माई सेल्स विल बी टू स्मॉल बिजनेसेस. तो ये अपन डिसएडवांटेज में पॉइंट कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे ऊपर वाले के. यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म मी ऑल द सेल्स 100 वो सब तो ठीक है. यू शुड परहैप्स ऑल्सो बी अवेयर दैट आई एक्सपेक्ट टू परचेज इक्विपमेंट एंड इनकर कॉस्ट ड्यूरिंग November 25. ठीक है, तो ये अच्छी बात है. अगर ये फ्यूचर में वेट भी करता है तो भी चलेगा. मतलब इवन ही वेट टिल द ईयर ऑफ 2029, स्टिल इट इज फाइन, बिकॉज यू विल बी परचेजिंग एन इक्विपमेंट इन द टैक्स इन November 25. ठीक है ना ऐसा. अभी कैलकुलेट इसको एक्चुअली घाई नहीं करनी चाहिए. मेरा ये सेशन रहेगा वैट के लिए. अभी आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे. Calculation of the tax adjusted trading profit. I first designed the product which I am about to start manufacturing in September 19, nearly 5 years ago. At that time, I paid a fee of 5,500 to design company to draw up the plans, but I did not go ahead with production. ये क्या है भाई. ये चीज सर्विस थी ना. नहीं ये चीज देखो, ये चीज सर्विस थी. प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह करना. दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर
नाउ द प्री रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आपके 6 महीने भी मतलब हो चुके हैं, नाउ यू आर सेइंग कि यू विल क्लेम, तो दैट्स नॉट अलाउड एक्चुअली। बट ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। एक मिनट, मैं तो ये खाली वैट के परस्पेक्टिव से सोच रहा हूँ, यहाँ पे वैट का क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड का क्वेश्चन है ये। ओ सॉरी 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 सॉरी। देखो अनइनकॉर्पोरेटेड के लिए कैसा था पता है क्या? प्रीवियस 7 इयर्स का प्री, ये मैं ले सकता हूँ प्री एक्सपेंडिचर। फॉर द प्रीवियस 7 इयर्स आई कैन क्लेम फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। ये वैट का क्वेश्चन नहीं है। देयरफॉर 5500 का ये जो है ना बिजनेस, आई कैन क्लेम। ठीक है ना? एक्सपेंस सॉरी। फिर आता है बिजनेस प्रमोशन का। In December 25, I will travel by train to visit 6 potential retail customers in the UK. I will explain my product to them, take them out for lunch, and give each of them a high quality chef's knife which carries a large engraving of my business logo on the blade. Okay. I estimate that the total cost of the promotional activity will be 1,800. I will particularly like to discuss two matters: registration purposes of that. Okay, अवेलेबल एंड द टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल है। हाँ ये देखो, वैट का क्वेश्चन अलग है, टैक्स डिडक्शन का क्वेश्चन अलग है। तो प्रोडक्ट डिजाइन के तो बारे में हमने बोल दिया कि आप प्रीवियस 7 इयर्स का यू कैन क्लेम। बट व्हेन इट कम्स टू विजिटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, द कॉस्ट फॉर टेकिंग देम आउट ऑन लंच एंड गिविंग देम, मतलब सॉरी प्रोडक्ट वगैरह, लंच वगैरह जो है ना, दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड बिकॉज एनी ऑफ द गिफ्ट दैट यू गिव टू एंटरटेनिंग कस्टमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनिंग यूके कस्टमर्स इज नॉट अलाउड ओनली। ठीक है ना? तो एंटरटेनिंग यूके कस्टमर्स ही चला गया पहली बात तो। एंटरटेनिंग यूके एंड प्लस दे आर नॉट इवन आर रियल कस्टमर्स, दे आर अवर पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है ना? तो वो फूड का तो आता ही नहीं है, that is gone. However, when it comes down to the the chef's knives, we can see that there is high quality chef's knives which carries the large engraving of the business logo on the blade. That means there is a conspicuous advertising that has been given as a gift. ठीक है ना? So we should exclude that cost of the knife that carries the business logo, एंड दैट कैन बी क्लेम्ड, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज वो एक कॉन्स्पिशियस एडवर्टाइजिंग है। बट दैट टू इफ द कॉस्ट ऑफ दैट गिफ्ट इज लेस देन 50, ऐसा भी था ना? बट दैट ऑल्सो इफ द कॉस्ट ऑफ ईच नाइफ बीइंग गिवन इज लेस देन 50, ऐसा अपन बोलेंगे। दस वी रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन और मोर कॉस्ट ब्रेकिंग ऑन द सेम, ये अपन बोलेंगे कॉस्ट ब्रेकेज, ऐसा कुछ तो थोड़ा सा अच्छे अच्छा दिखने के लिए। ये देखो, हाँ बस एसपीडी, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने मतलब मेमोरेंडम बोला हुआ है ना? चलो आगे। सीएसपीडी रजिस्टरिंग फॉर वैट, कैल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर वैट बिकॉज बराबर है, परफेक्ट। टैग कैन रजिस्टर वॉलंटरी बिकॉज ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज, परफेक्ट। Once he has registered, Tyrel would be able to recover all of his input tax because all of the supplies of his business will be standard rated. He would also be able to recover input tax incurred in respect of. He would also be able to recover input tax incurred in respect of goods purchased for business premises in the 4 years prior to registration, provided he still owns the relevant items. बराबर है। हाँ, प्रोवाइडेड ही स्टिल ओन्स द रेलेवेंट आइटम, बराबर है। सर्विसेज परचेज फ्रॉम द बिजनेस पर्पस इन द 6 months प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, परफेक्ट। टायर वुड हैव टू चार्ज 20% वैट ऑन हिज सेल्स। Tire's non-business customers and those business customers who are not registered for VAT would not be able to recover his VAT. बराबर है, हाँ बराबर है। जो 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 कस्टमर्स रजिस्टर्ड ही नहीं, ये भी अपन ने सही बोला था। इफ टायर इज एबल टू पास ऑन his customers the price increase, resuming the charge of the VAT, the profitability of his business is likely to reduce, बराबर है। एक्चुअली इन्होंने इसको अलग अलग पॉइंट में लिखा है, मैंने इसको एक ही पॉइंट में लिख दिया था। ठीक है, एनीवेज। कॉस्ट आर अलाउेबल फॉर द पर्पसेस, एक मिनट ना, कॉस्ट आर अलाउेबल for the tax purposes where they are incurred wholly and exclusively for the purpose of trade and are not specifically disallowed. ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट,
The design costs are allowable for the tax purposes because they were incurred by Tile within 7 years prior to commencing the trade and would have been an allowable expense if they had been incurred after he began trading. The cost will be treated as having been incurred on 1st of December 2025. हाँ, ये लास्ट वाली लाइन अपन ने नहीं बोली, लेकिन ये बोलनी चाहिए थी कि 7 years प्रायर ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर अलाउेबल है, लेकिन उतना अलाउेबल है लेकिन ऐसे अलाउेबल है कि वो आपको शो करना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग। ऐसा ये अपन ने नहीं बोला, ये बोलना है cost of promoting the business, that the travel cost will be allowable for the for the tax purpose with above principles। अच्छा, okay। Cost of buying lunch for prospective customers will be classed as entertaining which will not be allowable for tax purposes। ठीक है, तो लंच का अलग करना है, ट्रैवलिंग का अलग करना है। ओके, ट्रैवलिंग कॉस्ट इज अलाउेबल, लंच का इज नॉट अलाउेबल, वो अपन ने बराबर बोला। और ये देखो, द प्रपोज्ड गिफ्ट विल कैरी अ कॉन्स्पिशियस एडवर्ट फॉर Tyrel's business and will not consist of food, drink, tobacco. Accordingly, the cost of the gift will be allowable for tax purposes, provided each one costs no more than 50 pounds. This will need to be confirmed। Perfect, ये भी अपन ने बराबर बोला। लेकिन एक बार ये अनइनकॉर्पोरेटेड का जो चैप्टर है ना, वो एक बार कर लेते हैं, है ना। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का चैप्टर, आई फील मतलब लिख देता हूँ कहीं पे, कॉर्पोरेटेड चैप्टर टू बी डन। ठीक है ना, चलो। 21 मार्क्स का तो हो गया है। 12। अभी हमें आना है ऊपर वाले क्वेश्चन, तो आई थिंक हमने हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब बाकी के हाफ हाफ की बारी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरी है ना थियोरी बहुत स्ट्रांग है, कैलकुलेशंस मेरे बहुत वीक है। तो जी दोनों में कैलकुलेशन है ही थोड़ा थोड़ा। मैं बोलता हूँ पहले ये चार्जेबल गेन्स का कर लेते हैं, बाद में ये 11 मार्क वाले पे जाते हैं, है ना। Chargeable gains. When carrying out this work, you should ignore the possibility of Coel's chargeable gains being subject to tax overseas। अच्छा, explain whether or not gains made by Cole on the sale of the portrait painting and the vintage car will be subject to UK capital gains tax। Holy shit भाई, ये तो इधर ही फट ली भाई। चलो भाई, ये अभी करते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी बी का 2। I set out below information you requested asset sales. On 1st of October 24, I purchased two paintings, a portrait for 26,000, a landscape for 24,000. I sold the portrait on 1st of June 2025 for 45,000. I could sell the landscape now, that is on 1st of August 25 for 39,000, or wait until 1st of May 2026 when I would expect to be able to sell it at 51,000 at a major auction in the UK। ओके, ये मेरे को थोड़ा ओके, फाइन 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 फाइन। इन द कर, अब जो अभी मैं ये बोलता हूँ, मैं थियोरी में बोलता हूँ एंड देन मैं सम जैसे मतलब फिगर्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो ठीक है। इन द करंट सिनेरियो वी कैन सी दैट on 1st of October 24, Shoal had purchased two paintings, a portrait and a landscape। ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, कॉपी पेस्ट। पहली बात तो ठीक है ना। However, we can also see that they have given us that on 1st of November they will be returning to UK and be UK resident again। So therefore, the, the temporary resident basis will apply। क्या होते हैं उसको, टेम्पररी नॉन यूके रेसिडेंट, सॉरी, टेम्पररी नॉन यूके रेसिडेंट basis will apply because they have been UK resident for 4 out of the 7 years। So therefore, after अभी कहाँ गया वो, सॉरी। So therefore, as we can see that when Shoal had sold the portrait on 1st of June 25, she was not in the UK and therefore would not have been taxed in the UK। However,
However, once she sold the portrait on 1st of June 25, बट एक सेकंड ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वो लोग छोड़ के कब गए थे यूके को? ओ, ये देखो, ऑन 1st of July 23 दे लेफ्ट यूके टू गो ओवरसीज, ऑन 1st of November 25 दे विल वो रिटर्न टू यूके, ठीक है, ऑन November 25. On 1st of October 24, she had purchased a portrait for 26,000, which she sold on 1st of June 25. So that means she purchased the portrait outside the UK and she sold the portrait also outside the UK. So therefore, portrait is not chargeable to UK CGT at all. However, when we come down to landscape, we can see that she can either sell it on 1st of August 25 for 39,000, but she will not be able to use the AEA of 3,000. ठीक है, for that year. And एक मिनट, पहली बात तो if she sells that 39,000 on 1st of August 25 ना, she will get 12,000 का lower value. She will get 12,000 का lower value. However, it's also the fact that she won't be taxed in the UK at all. ठीक है, because that expense is also मतलब that sale has also taken place outside the UK for the asset that was purchased outside the UK. But when she waits and on first and sells on 1st of May 2026, she would be selling that asset in the UK, which would be taxable under the UK bound मतलब under the UK CGT. So therefore that the tax would be payable would be 51,000 माइनस मैंने परचेज कितना किया था लैंडस्केप 24,000. अच्छा, मैं अभी इतना ही खाली बोल बोल के लिख रहा हूँ, ये सब चीजें एग्जाम में लिखनी है, मैं ऐसे ही अभी खाली मैं वो करना नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ. 24,000 इंटू द परसेंट, मतलब ये मेरा टैक्सेबल गेन्स बन गया. दिस विल बी टैक्सेबल एट 10 or 20 वॉट एवर परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ कार, सॉरी व्हाट काइंड ऑफ इनकम शी हैज. ऐसा अभी 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 आते हैं अपन कार के ऊपर. On 1st of July 25, I sold a vintage car for 89,000. I had purchased this car on 1st of February 23. That means she had purchased this car when while she was a UK मतलब वो resident, but she sold the car when she was outside, when she was not a UK resident और क्या बोलते हैं मतलब वो temporary non UK resident. Once she sold, पहली बात तो cars are not allowed under CGT. Cars are not chargeable under CGT. But this is a vintage car, and it being a vintage car will be chargeable under CGT. So, um, on 1st of July 25, she would have sold the vintage car. Thus, now for 5 years, she should not have come to UK after making the sale. बराबर है. So till 1st of July 2030, she should not have arrived in UK. But as she came on 1st of November 25, मतलब वो temporary non UK मतलब basis will apply, and once she lands in the UK, she will be taxable on that date itself. तो 89,000 minus 54,000 is 35,000 minus 3,000 whatever, and then वो चार्जेबल होगा उसको, ठीक है ना. ये अपन ने बोल दिया. आई थिंक ये, अरे भाई इतना ही नहीं था, लेकिन बस अपन ने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया कि अपन बहुत सही चीज़ों को वैसे वो घुमा फिरा रहे थे. Explain with supporting a calculation whether Shoal should sell the landscape painting now for 39,000 or should wait until 1st of May 2026 when she'll be living in the UK to sell for 51,000. You should assume for she wishes to maximize her post-tax proceeds, and then she will be and that she'll be a basic rate taxpayer in the tax year 25-26 and a higher rate taxpayer in 26-27. ओके. ओके, तो ये 24,000 पे 20%, विच इज 4,800 पोस्ट proceeds will be 51,000 46,200 इन केस वन. एंड अगर मैं दूसरा केस बोलूँ तो 39,000 माइनस 24,000 विच इज 15,000 माइनस, अभी 15,000 माइनस ए करूंगा क्या मैं यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता कि मैं ए करूंगा, बिकॉज आई फील भाई ये थोड़ा वियर्ड है. इफ ए इज अवेलेबल देन 12,000.
12,000 के ऊपर 10% टैक्स ना उन्होंने बोला है, तो 10% टैक्स 1,200, तो फिर 37,800 का आता है फिर तो टैक्स इसको, अगर ये बाहर बेचती है तो। ऐसा मैक्सिमाइज तो इधर ही होंगे ना, पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स। भाई मैं सेल ही देखो ना कितना ज्यादा कर रहा हूँ। ऐसा फालतू सवाल था भाई ये। या फिर मैंने बहुत ही गंदा समझा इस क्वेश्चन को, ये इन दोनों में से कुछ भी हो, एक हो सकता है। हाँ यार वही पूछा है मतलब उन्होंने, है ना। ये 26 27 का है, और ये 25 26। अभी देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं थियरी लिखूंगा तो ऑब्वियसली आंसर भी मतलब बड़ा दिखेगा। ठीक है ना। मैं तो मेरे को सही लग रहा है भाई, ये देखो। आ जाते हैं अभी हम लोग, ये देखा उनका क्वेश्चन। Generally, gains are subject to UK CGT where an individual is either tax resident in the UK or only temporarily non-UK resident, non-UK tax मतलब वो resident. In the tax year 25 26, Shoal was temporarily non-UK resident prior to becoming UK tax resident on 1st of November 25. This is because she was UK tax resident for at least 4 out of the 7 tax years prior to the tax year of her departure from UK. She was non-UK tax resident for less than 5 years. ठीक है ना। हाँ, नॉन यूके रेसिडेंट फॉर लेस देन 5 पर है। पोर्ट्रेट पेंटिंग, despite Shoal being a temporarily non-UK resident, her gain on the sale of the painting will not be subject to UK CGT. This is because she both purchased and sold it where while she was not मतलब while she was a non-UK resident, मतलब she was outside the UK. Cars are exempt assets for the purpose of UK CGT. According the profit on the sale of the vintage car will not be subject to CGT. ओ अच्छा, तो विंटेज है इसलिए भी नहीं क्या? सॉरी 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 सॉरी। विंटेज कार है, विंटेज मैटर ही नहीं करता, कार है तो नहीं है। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मतलब वो मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा विंटेज है तो शायद भाई चैटल वैटल का कुछ होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ कोल्स विंटेज का विल नॉट बी सब्जेक्ट टू यूके सीजीटी रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। ओके ओके ओके, आई जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट। फाइन, तो इधर 7 में कितना, 8 का था ना, 8 में से आई थिंक 5, तीन तीन तो मार्क्स जाते। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद लैंडस्केप पेंटिंग। द गेन ऑन द सेल ऑफ द लैंडस्केप पेंटिंग विल नॉट बी सब्जेक्ट टू यूके सीजीटी इफ इट इज सोल्ड बिफोर रिटर्न टू द यूके। दिस इज बिकॉज शोल विल हैव बोथ परचेज एंड सोल्ड द पेंटिंग व्हाइल शी वाज ओवरसीज अकॉर्डिंगली द सर्कम। अरे हाँ भाई, ये चीज मैंने बोली भी थी, ये चीज मैंने बोली थी, फिर मैंने क्यों नहीं किया भाई, ये मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया? अरे मैंने बोला था भाई कि वो अगेन शी विल बी सेलिंग द यूके एंड ये सब। आई थिंक मैं थियोरी में लिखना ही बेटर था भाई मेरे लिए। बेसिकली बेसिस तो शी इज सेलिंग द एसेट अगेन ऑन 1st of August 25 व्हेन शी इज आउटसाइड द यूके। अगेन तो परचेज एंड सेल दोनों आउटसाइड ही हो रहा है। हमारे ये वाले पोस्ट प्रोसेस तो बिल्कुल सही है। इन द व्यू अबाउट शोल शुड सेल द लैंडस्केप पेंटिंग आफ्टर शी हैज रिटर्न टू द यूके। तो हमारा कंक्लूजन सेम रहता है, बट मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया जब मैंने पहले बोला, आई जस्ट फॉरगॉट द फैक्ट कि हाँ भाई वो 1st of August 25 को जब आ रही है तो उसके बाद नहीं है वो चार्ज। आई जस्ट फॉरगॉट दैट। तो when I would be writing and the answer would be in front of me, I think I would be much better भाई। ठीक है चलो कोई ना। नाउ लेट्स मूव डाउन टू, कहा गया भाई वो, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। ठीक है।